श्री राधे बाके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। मम इष्ट महालक्ष्मी मात की जय। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मैं आवहै। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। ऋण रोगादि दारिद्र्यं पापंच अपमृत्यु भय शोक मनस्ताया नश्यन्तु मम सर्वदा। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं लाडली बेटियों, कभी कभी आपके दिल में ख्याल आता होगा कि इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स एंड आवर बेस्ट कैपेबिलिटीज वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी डिजर्व एंड व्हाट वी डिजायर। जबकि कुछ लोग तो सहज में ही कहीं से कहीं पहुंच गए, बढ़ गए। हमने तो सारी रात पीसा और पानी में सकेला। यानी हमारे अचीवमेंट्स, हमारी उपलब्धियां तो गैरों के सामने, गैरों के मुकाबले में फेल है। तो दिल में एक हुक सी उठती होगी कि कीने सुनावा, क्या कीने सुनावा कुण सुने लो मारे मनडारी बात। कीने सुनावा कुण सुने लो मारी मनडारी बात। क्या कोई ऐसी संत की चौखट है जहां पर जाकर हम हमारे मन की बात को कह सकें और कोई ऐसा सरल सा उपाय मिल सके जिससे कि हमारे ऊपर भी गैरों की तरह ही लक्ष्मी कृपा बरसने लग जाए। इस क्रम में सर्वजन हिताय एक बहुत लंबे अरसे से श्री महालक्ष्मी माता की हमने साधना और अर्चना की है। उनकी कृपा से ही एक ऐसा प्रसाद मिला है, वो है प्रसाद निःशुल्क सबके लिए। श्याम वाटिका वृंदावन में अवेलेबल है, मिलता है। यह प्रसाद खाने का नहीं है किंतु हमेशा के लिए रखने के लिए है। महापर्ष who advised Ravan, instigated Ravan for बलात्कार, rape with सीता। रावण अपनी मजबूरी बताता है। पितामहस्य भवनम गच्छन्तीम पुंजिक स्थलाम I saw a celestial nymph, दिव्य अप्सरा देखी, named पुंजिक स्थलाम, going to ब्रह्मा। से प्रसह्य मया भुक्ता कृता विवसना। She was stripped of her garments and ravished by me, raped by me. Highly enraged Brahma addressed the following words to me. Adya prabharti yamanyam balan nari gamishyasi tada te shatada murda falishyati neshansya. If you violate any other woman henceforward, your head will be split into 100 pieces. Hence, afraid of that curse, I do not put Sita on my charming bed by force. अतः मैं मेरे सुंदर पलंग पर सीता को जबरदस्ती नहीं चढ़ा सकता हूँ। Now, Vibhishan comes. Vibhishan exhorts Ravan to restore Sita to Sri Ram. तो रावण स्पीक्स, सौग्रश्य एव मे वेगो मार्तस्येव मे गति। My fury resembles that of a sea and my speed resembles the speed of the wind. Ram doesn't know of it, hence
he is marching against me. सोते हुए शेर को कौन जगावेगा? Otherwise, who will arouse a lion asleep in its abode? Ram has not seen my arrows like serpents with forked tongues. I shall consume Ram in no time with my arrows loosed in hundreds like the thunderbolt from my bow. Even as one would torment an elephant with firebrands. उदितः सविता काले नक्षत्राणां प्रभामेव. May surrounded by a huge army, I shall split his army as rising sun disperses the light of the stars. Even Indra, the ruler of gods, is not capable of conquering me in an encounter. Even Varun, the god of water, cannot face me. This Lanka, which was formerly ruled by Kuber, son of sage Vishnuva, was won by me with the strength of my arms. Just see the language of pride of Ravan. He is saying about Kuber as son of Vishnuva. He is not saying that he is my brother. He is not saying that Kuber was my brother. Just see his pride. विभीषण सीता को लौटाने के लिए रावण से प्रार्थना करता है. यदा प्रभर्ति वैदेहीं संप्राप्तो अहं परम तप तद प्रभर्ति दृश्यन्ते निमित्त अन्यानि अशुभानि ने. Ever since Sita arrived here, evil portents are being observed by us. जब से सीता यहाँ आई है तभी से अपशकुन दिखाई दे रहे हैं. क्या? गवाम पयांस स्नानि विमदा वर कुंजराः दीनम मस्वा प्रहेशन्ते नवग्रास अभिनंदिनः. The milk of cows has dried up. Ichor mud of elephants no longer flows from the temples of the elephants. The horses neigh dolefully, though satisfied with fresh fodder grass. Gridhash pariliyante purimupari pinditah. Vultures swarm over मंडराते हैं कहाँ? Over the city. While arrived near the city, she jackals, गिदड़ियाँ, howl, cry, रोती हैं, ominously, both morning and evening. रोच्ये वीर वैदेही राघवाय प्रदीयताम. This atonement is desirable, that Sita be restored to Ram. Ram swoops upon the empire like a falcon or hawk on its prey. जैसे बाज अपने शिकार पर झपटता है, ऐसे राम इस नगरी पर झपटने को तैयार है. Listen to my soft entreaty request. Cherish peace and cherish virtue and save your sons and daughters. Sita her lord restore, Ram's grace implore. Vain is thy might, because Ram battles for the right. Listening the speech of Vibhishan, Indrajit, Meghnad indulges in boastful speech and rebukes chides. फटकारता है विभीषण को, कहता है हमारे कुल खानदान में ये कैसा डरपोक और कमजोर चाचा हो गया. सत्वेन वीर्येण पराक्रमेण धैर्येण शौर्येण च तेजसा च. एक है कुले अस्मिन् पुरुषो विमुक्ता विभूषणस्तात् कनिष्ठ एष. This Vibhishan, the youngest uncle, is the only individual, केवल यही है जो in our race who is utterly devoid of courage, prowess, fortitude, heroism and spirit.
कुतो भीष्य से इसमें भीरो, ओ डरपोक चाचा हमें क्यों डरा रहे हो? Why do you frighten us, O coward uncle? Even an insignificant Rakshas can kill those two sons of a king of men. त्रिलोकनाथ हो ननुर देवराज है, शक्रो मया भूमि तले निविष्ट है. Even the ruler of gods Indra and the protector of all three worlds was cast by me to the ground. So aham suranam api darpahanta, dattyo utmanam api shok karta. I have crushed the pride of gods and brought grief even to the foremost of Datyas. Annoyed to hear the advice of Vibhishan, Ravan castigates him with harsh words. रावण कहता है, it is better to live with an enemy and to live with an enraged venomous serpent. क्रुद्ध जहरीले सर्प के साथ रहना भी ठीक है, than to live with an individual who seems to be a brother, लेकिन to be a brother but is devoted to the enemy. Neither fire nor other arms nor snares strike terror into us, but those of our own kind, स्वयं के जाति के लोग ही, who are cruel and actuated by self-interest are most dangerous. विद्यते गोषु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम विद्यते स्त्रीषु चापल्यम विद्यते ब्राह्मणे तपे. There exists wealth in the cow, there exists capriciousness, chapalta in woman, and asceticism in Brahman, but there exists danger, peril from one's own kinsfolk. लेकिन अपनी ही जाति के लोगों से ही सबसे बड़ा खतरा रहता है. यथा पुष्कर पत्रेषु पतितास्तोय बिंदवः न श्लेषम अभिगच्छन्ति तथा अनार्येषु सौहृदम. Love bestowed on the unworthy does not moisten their heart any more than drops of water fallen on lotus leaves penetrate the latter. यथा शरदि मेघानां सिंचितामपि गर्जिताम्. Even as the earth is not saturated with the water of clouds thundering and raining in autumn, so love bestowed on the unworthy fails to moisten their heart. यो अन्यस्त एवं विधि ब्रूयाद वाक्यम एतन् निशाचर अस्मिन् मुहूर्ते न भवेत् त्वां तु धिक् कुल पंशन कुल कलंक. निशाचर तुझे धिक्कार है, यदि तेरे सिवा कोई दूसरा ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता. O slender of your race, O obliquity of your race, a curse of your race. If anyone other than you has uttered such words, O ranger of night, O Nishachar, he would have undoubtedly ceased to be this very moment. विभीषण कहता है, ज्येष्ठो मान्य पितृ समो न धर्मपते स्थित. Being my eldest brother, you are worthy of respect to me like a father, yet you are not steadfast on the path of virtue. Think him, Ram, not a common hermit, who Ayodhya ruled of yore,
crossing India's streams and mountains, thunders now on Lanka's shore. विभीषण बहुत अच्छी बात कहता है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन है, अप्रियस्य च पथस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। ओ किंग, people speaking palatable words are easily found, but he who utters and listens to words which though unpleasant to hear, yet conducive to one's good, is difficult to find. I didn't wish to see you killed by Ram. You are going to perish like a house in flames. Blind to reason and to wisdom, Ravan, you seek thy destined fate for thy impious lust, for woman, for thy unrighteous hate. गलत काम वासना, सेक्स डिजायर त्याग दो, क्योंकि ब्लाइंड टू डेंजर and destruction, deaf to word of counsel given. By the flaming shafts of Ram, thou shalt die by will of heaven. स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया बिना। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे बिना सुखी होना। May prosperity attend on you. I shall go. Be happy in my absence. Ponder yet, O monarch, save thy race and save thy own. Guard thy ancient throne. Ravan, part we now. हम हमेशा के लिए अलग होते हैं. Vibhishan goes to Sri Ram for shelter. Sugriv informs Sri Ram. रावणस्य अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः चतुर्भिः से रक्षोभिर्भवन्तं शरणं गतः। रावण का अनुज 4 राक्षसों सहित आपकी शरण में आया है। रावण is younger brother, known by the name of Vibhishan, has sought you as his refuge along with 4 Rakshasas. Angad tendered the following advice. शत्रु सकाशा संप्राप्त है सर्वथा तर्के भी विश्वसनीय सहसा न कर्तव्यो विभीषण. Vibhishan should not be dealt with as trustworthy at all at once, because he has arrived direct from the enemy's camp. He should be viewed with suspicion in every way. क्योंकि छादयित्वा आत्मभावम ही चरन्ति षड्बुद्धे, because the people of perfidious mind, treacherous mind, move about concealing their motive. और वो क्या करते हैं? प्रहरन्ति च रंध्रेषु सो अनर्थ है सो महान भवेत, and they attack or blow at once. Weak points when get chance, and that may prove to be disaster of no small magnitude. मौका पाते ही वो प्रहार कर बैठते हैं.